very good morning, students. I hope you all are doing great and revised your previous lessons. Today we are going to do our chapter 5, which is programming language, small basic. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Programming Language, Small Basic, and the topics that you would learn in this chapter are Introduction to Small Basic, Starting Small Basic, Components of Small Basic, Writing a Small Basic Program, Saving a Program, Executing a Program, Storing a Program, Elements of Small Basic Programming, Operators and Expressions, and Statements. Now, computer programming एक process होता है of software development using programming languages. कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है प्रोग्राम्स को रिटन इन सर्टेन लैंग्वेजेस जस्ट लाइक वी स्पीक इन आवर मदर टंग. ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देयर आर मेनी लैंग्वेजेस दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड स्मॉल बेसिक इज वन ऑफ देम. तो इंट्रोडक्शन टू स्मॉल बेसिक. बेसिक एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन एंड बिजनेस एप्लीकेशन. इट्स नेम स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. Now, small basic एक simpler version है of basic. It is a programming language that makes programming simple and easy for beginners. Till now, we have created programs using blocks. Small basic enable करता है हमें to do text based programming using simple English like commands. Vijay Raji developed small basic version 0.1 in the year 2008. Microsoft ने release किया version 1.0 of small basic on 12th July 2011. On 27th March 2015, small basic version 1.1 was released and latest version 1.2 was released on 1st October 2015. Small basic programming consists करता है of a bunch of statements. एवरी लाइन ऑफ अ प्रोग्राम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एक स्टेटमेंट को एंड एवरी स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है फॉर द कंप्यूटर. Now, when we ask the computer to execute the small basic program, it takes the program and read the first statement. Now, it understands what are we trying to say and then execute our instruction. Now, once it's done executing our first statement, it comes back to the program and reads to execute the second line. It continues to do so until it reaches to the end of the program. That is when our program finishes. तो small basic के features क्या हैं? ये easy to use है, integrated development environment यानी कि IDE हमें यहाँ पे मिलता है, response to mouse and keyboard actions, button and text box controls, full array of mathematical, string handling and graphics functions. Then it is easy work arrays and sequential file support. Now to download the small basic, हमें follow करना है इस link को. After downloading the software, double click on it to install. Starting small basic. तो small basic को start करने के लिए हम सबसे पहले click करेंगे search button पे. Search bar appear होगा. Then type small basic in the search bar. Click on the small basic in the list appeared. एक small basic screen जो है वो appear हो जाएगी on the monitor. There is a small practice question. You have done some coding and programming in the previous classes. Name some application softwares on which you have created codes. Components क्या है हमारे small basic environment के? So we have our title bar, toolbar, editor, surface, and we have our help area. Now title bar ये contain करता है हमारे program का name on which we are currently working. Toolbar ये contain करता है all the commands that help us in creating, saving, opening and executing small basic programs. Then we have editor, ये एक area है where we write the program code of small basic, and when we open a saved program ये show करता है in the editor. We can then modify it and save it for later use. We can also open and work with more than one programs at a time. Help area ये वो area है जो display करता है हमें कुछ tips and hints while we are writing the program code in the editor window. Then we have surface, ये एक open area होता है where we can move या फिर organize our editor windows for each small basic program. Now, small basic editor use करता है different colors का to write comments, variables, statements and the data used by different objects. Coloring help करता है हमें identify करने में if any mistake made during typing. Writing a small basic program, तो हमें click करना है inside the editor window, then observe करना है that line number 1 जो है यहाँ पे वो already indicated है there. Now start typing the program at this point. While typing program code, एक pop-up window appear होगी जिसे हम बोलते हैं IntelliSense. Now ये contain करता है list of commands that we can use. हम select करते हैं appropriate command by navigating through the list with the help of up and down arrow keys, and then हम press करते हैं enter की का to insert the highlighted command in the program.
Now after typing the code on line 1 हम प्रेस करेंगे एंटर की का, लाइन नंबर गेट्स इंक्रीमेंटेड टू 2. सिमिलरली हमें टाइप करना है रेस्ट ऑफ द कोड सब्सिक्वेंट लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंगली एंड वी टाइप इन द हेल्प एरिया प्रोवाइड करेगा हमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन relevant to the codes that we are using. Rules क्या क्या है to write the small basic program? So there are certain rules to write program in small basic. हमें क्या करना है, all the commands and keywords जो है वो यहाँ पे correctly spell होने चाहिए. For example, if we type text win instead of text window, एक error यहाँ पे occur हो जाएगा. Keywords and variables जो है वो case sensitive है in small basic. That means अगर हम type करते हैं right line या फिर right line, they are considered to be the same. Now small basic ignore करता है any white space जैसे blanks, but ये also advisable है to use spaces as they enhance the readability of the code. Use apostrophe यानी कि prefix for comments. Variables are never declared and any value can be assigned to a variable. Saving a program, it is very important to save the program so that हम उसको future में use कर सकते हैं. Click on the save button in the file group. एक dialog box appear होगा, आपको एक desired location choose करनी है to save your file. एक meaningful name provide करना है अपने program को in the file name box and press the save button. The file will be saved with the extension .smallbasic या फिर .sb. Executing a program, so we need to execute या फिर run the program to see the output. हमें क्लिक करना है रन बटन पे ऑन द टूल बार या फिर हम प्रेस कर सकते हैं F5 फंक्शन की. द कमांड विंडो शोइंग द आउटपुट विल अपीयर. शेयरिंग अ प्रोग्राम, तो हम शेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को विद अदर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो व्यू एंड रन इट ऑन देयर सिस्टम्स. तो हमें क्लिक करना है ऑन द पब्लिश बटन इन द वेब ग्रुप. एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कंटेन करता है प्रोग्राम आईडी एंड अ लिंक. नाउ वी कैन ईदर प्रोवाइड आईडी नंबर या फिर लिंक टू द पीपल जिनके साथ हम प्रोग्राम शेयर करना चाहते हैं. To view and run the published program on another system, click करना है import button पे in the web group and type करना है program ID को in the dialog box as prompted. Click on OK and the code will be loaded to the editor. We can also share our program by opening the link in the browser. Elements क्या क्या है हमारे small basic programming के? So we will now learn about some basic elements of small basic programming: variables, operators and expressions, keywords and comments. तो वेरिएबल्स क्या है, इनका यूज किया जाता है टू स्टोर सम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट या फिर नंबर एंड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. जब भी हम स्टोर करते हैं कोई वैल्यू या फिर इंफॉर्मेशन इन अ वेरिएबल, ये ओवरराइट करता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन को विच इज स्टोर्ड इन इट. इट कैन कंटेन डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. टू क्रिएट वेरिएबल्स इन स्मॉल बेसिक हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का. फॉर एग्जाम्पल नंबर इक्वल्स टू 9, फ्रूट इक्वल्स टू मैंगो एटसेट्रा. Following program can only calculate 2 plus 2. Text window, write line 2 plus 2. By following the program can calculate any kind of addition. In this case, x and y are variables. तो यहाँ पे x लिया हमने, text window write x, then x is equals to text window read number, text window write y, फिर read number, then हमने x plus y दोनों का क्या करा दिया सम. Look at the variable types. वेरिएबल जो हम स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, पहला आता है न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल का यूज किया जाता है टू स्टोर दी numbers for calculations and they can hold integer and decimal numbers. Numeric variables जो होते हैं वो hold करते हैं integers को, they are called integer variables. Numeric variable जो hold करते हैं decimal numbers उन्हें हम बोलते हैं floating variables. For example 76 minus 66 8.29. Now string variable, strings क्या है, set of characters हैं that can be mixture of numbers, letters and other characters. For example welcome world, 645 Damning collection and this. Boolean variables का यूज किया जाता है to make decisions and ये जो type of variable है ये hold करता है दो values true या फिर false. Now the names we give to the variable are called identifiers. जो भी हम अपने variables को name provide कराते हैं उसे बोला जाता है identifier. Look at the rules for naming variable. Variable name include करता है letters, lowercase and uppercase, digits 0 to 9 and underscore character. Variable name should always start with the letter या फिर underscore, not numbers. Variable name can only use letters, digits and underscores. Name of the variable should describe the value that they store. Now don't use small basic keywords जैसे if, else, then and or while to name the variable. Variable name in small basics are case sensitive. There is a practice question जहाँ पे you need to circle the incorrect variable name. 7 layer office
तो इट इज दी 7 लेयर, बिकॉज नंबर से वेरिएबल नेम कभी भी स्टार्ट नहीं होता. ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, तो ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं टू एक्सप्रेस एन ऑपरेशन यानी कि फंक्शन. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल. एन एक्सप्रेशन जो कंबाइन करता है ऑपरेटर्स को एंड ऑपरेंड्स को, यानी कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को. एन एक्सप्रेशन हैविंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिजल्ट इन सम न्यूमेरिकल वैल्यू. रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है इस इन एन एक्सप्रेशन रिजल्ट करते हैं ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये इनको यूज किया जाता है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स. नाउ देयर आर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने डिफाइन किया है. जैसे पहला आता है प्लस, विच इज फॉर एडिशन. ये ऐड करता है हमारी बोथ साइड की वैल्यूज को, लाइक एक्स प्लस वाई जहाँ पे एक्स 8 है एंड वाई 4, इट विल बी 12. माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये सेपरेट करता है हमारे राइट हैंड ऑपरेंड को फ्रॉम द लेफ्ट वन, यानी कि y 4 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 विच इज 4. मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई करता है हमारे दोनों वैल्यूज को, तो x इंटू वाई इज 32. देन स्लैश फॉर डिवीजन, ये डिवाइड करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेटर को बाय द राइट हैंड, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2. देन एक्सपोनेंशियल, ये परफॉर्म करता है एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशंस ऑन ऑपरेंड्स, तो इट विल बी 41. लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज किया जाता है प्राइमरीली इन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन टू मेक डिसीजन. स्मॉल बेसिक सपोर्ट करता है कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और. नाउ एंड ये रिटर्न करता है ट्रू अगर हमारे दोनों ऑपरेंड्स का जो कंडीशन है वो ट्रू है. लाइक 5 इज ग्रेटर देन x, जहां पे x क्या है 4, तो यस इट इज ट्रू. देन x क्या है छोटा है 10 से, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशंस, दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है. और का मतलब होता है जहां पे दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू. लाइक 5 is greater than x, yes it is true, but 2 is greater than x, no it is not true. लेकिन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू. रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स है इनका यूज किया जाता है टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न बूलियन ट्रू या फिर फॉल्स अकॉर्डिंगली. नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जैसे इक्वल, ये चेक करता है कि जो वैल्यूज हैं दोनों ऑपरेंड्स की वो इक्वल है या नहीं. इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू. लाइक x इज इक्वल्स टू y, क्या 8 y के इक्वल है, नो, फॉल्स. देन नॉट इक्वल, ये चेक करता है कि जो वैल्यूज हैं दोनों ऑपरेंड्स के वो इक्वल नहीं है. नाउ इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल तो कंडीशन बिकम्स ट्रू. लाइक x इज नॉट इक्वल्स टू y, यस ट्रू. ग्रेटर देन, ये चेक करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर है हमारे राइट ऑपरेंड की वैल्यू से, इफ यस तो कंडीशन बिकम्स ट्रू. लेस देन चेक करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है हमारा वो वैल्यू जो है वो लेस है हमारे राइट ऑपरेंड से या नहीं, एंड इफ इट इज देन इट विल बिकम ट्रू. नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चेक करता है कि जो हमारे लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो राइट से बड़ी है या फिर इक्वल है. अगर दोनों में से कुछ है तो इट विल रिटर्न ट्रू. एंड लेस देन इक्वल टू चेक करता है कि जो वैल्यू है लेफ्ट ऑपरेंड की वो लेस है हमारे राइट साइड से या फिर इक्वल है, तो इट विल रिटर्न ट्रू. Now, if an expression has more than one operator, small basic follow करता है एक order of precedence. जैसे first parenthesis, then multiplication, division, left to right, then addition and subtraction. Keywords, keywords क्या होते हैं? ये कुछ reserved words होते हैं which cannot be used as a variable. They are predefined by the software developer for some specific purposes. कुछ keywords हैं जैसे for, if, else, else if, for, sub, and while, then, go to, etc. Comments इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कमेंट स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोड. ये हेल्प करता है प्रोग्रामर को द सेम और अनदर टू अंडरस्टैंड द मॉडिफाई द कोड इन फ्यूचर. कमेंट स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं एंड दे डू नॉट गिव एनी आउटपुट, दे आर जस्ट सीन ओनली इन द कोड. स्मॉल बेसिक के अंदर एक अपॉस्ट्रोफे को यूज किया जाता है एज अ कमेंट सिंबल. एनीथिंग रिटन after the comment symbol will be ignored by the compiler when we run the program. For example, calculate the percentage, यहाँ पे हमने a लगा दिया apostrophe, तो we can also place a comment on the same line as the same statement. For example, roll number equals to this 20, class roll number of student. लेकिन यहाँ पे जो हमारे कमेंट्स होते हैं ये कंपाइलर इग्नोर करता है, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं होती, दे आर जस्ट फॉर रीडेबल पर्पस. स्टेटमेंट जो होते हैं ना प्रोग्राम स्पेसिफाई करते हैं एक एक्शन को टू बी टेकन only when a condition is met. Now, once a condition is satisfied, तो execution stop हो जाता है. Let us discuss some different forms of branching statements available in small basic. तो if then statement एक most basic type of branching statement है.
It is used to take decisions based on the comparison. ये check करता है only true condition of the program and becomes to an end. जैसे if हमारा condition, then हमारा statement and end. Now if the condition is true, तो instruction जो specify किया गया है then के बाद में वो execute होगा, and if the condition is false, तो वहाँ पे कोई भी output नहीं आएगा of the if block, and the control will be transferred to the statement written after the end of statement. जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन है इफ क्लॉक आर इज लेस देन 12 देन गुड मॉर्निंग वर्ल्ड एंड इफ अदरवाइज इफ देन गुड इवनिंग वर्ल्ड एंड इफ नाउ गुड इवनिंग वर्ल्ड यहाँ पे आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू if then else एक अनदर फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाई डायरेक्शनल यानी कि टू वेज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे जो कंडीशन है वो दी जाती है इफ इट इज ट्रू स्टेटमेंट स्पेसिफाइड आफ्टर देन आर एग्जीक्यूटेड बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट फॉलोइंग द एल्स आर एग्जीक्यूट यहाँ पे क्या होता है कि इफ कंडीशन तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी एल्स अगर ये फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगी like if clock hour is less than 12 then good morning else good evening. So this is how it will display. If else if ladder. Now if we want to check multiple conditions in a program तो हम add on कर सकते हैं multiple else if statements in it. Else if ladder provide करता है हमें compact way to make multiple tests on a condition. If an if else if ladder statement inside an else block ये execute होते हैं only when all the conditions that come before it in the ladder are false. Now when any condition is true, जब कोई भी condition true होती है, statements associated with that condition are executed and the program moves to the first statement after end. Go to statements होती है हमारे पास यानी कि ये statements jump करते हैं anywhere to be labeled place in the program. Label is written with colon such as start. Now in the following example, program check करेगा input text को and if y or n then show करेगा true या फिर false. Otherwise the input text again with go to statements in line 10. Like start then answer read कराया हमने if y then true and if n then false else go to start. So 1 plus 1 equals to 2 y or n. Let's revise the chapter. Basic is a very simple programming language जिसको use किया जाता है for calculations and business applications. Its name stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Basic programming consists करता है of a bunch of statements. Editor is the area where we write the program code of Small Basic. Small Basic ignore करता है any white space जैसे blanks, but it is advisable to use spaces to enhance the readability of the code. All commands and keywords must be spelled correctly. Variables, operators, expressions, keywords, and comments are the elements of Small Basic. We have some new words. Program एक sequence होता है of instructions written to perform a particular task. Variable ये store करता है different types of information in the computer's memory. Operator symbol used to perform certain manipulation. Keyword a word that has special meaning in Small Basic. Statement an instruction in a programming language. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. So our very first question here is this method is used to read string as an input. So read. Which statement is used to check multiple conditions in a program if else if later? Which among of the following statement is considered as bidirectional statement if then else? Which key is used to run a program in Small Basic? F5. Now fill in the blanks. Dash enables us to do text-based programming using simple English like comments. Small Basic. Small Basic has a feature called Dash that helps us to type our program faster. So it is IntelliSense. Dash operator are used to compare the values of the two operands and return Boolean value true or false accordingly. So it is relational. Dash operators are used to perform arithmetic operations in two operands, logical. And the dash in a program specify an action to be taken only when a condition is met statement. So students, this was your complete chapter about programming language Small Basic. I hope it is clear to you. Do revise your chapter once again and also learn your exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.